So, welcome to Study Ayurveda with SK. Today, we will study about the skin examination or examination of the skin. How we can do the skin examination. So, skin skin is the surface. Skin is a outermost layer of a body, and it is the largest organ in the body. So, its a surface area of is about 1.5 to 2 millimeter in the adults. So, layers are mainly two types. They are the epidermis is outer layer and the dermis. Most superficial layer of a skin is the epidermis, composed of a stratified squamous epithelium. It contains the stratified squamous epithelium. The epidermis is having a thickest on palm and sole. पाम के ऊपर थिक और सोल के ऊपर थिकेस्ट रहेगा एपिडर्मिस. नो नर्व एंडिंग और ब्लड वेजल्स. नर्व एंडिंग भी नहीं रहेगी, ब्लड वेजल्स भी नहीं रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट डर्मिस. डर्मिस कैसा होगा? टफ एंड द इलास्टिक. इट्स अ टफ एंड द इलास्टिक, formed from connective tissue, whereas the epidermis is formed from the stratified squamous epithelium. Okay, the collagen fibers and the connective tissue. Dermis is formed from the connective tissue and the collagen fiber. Main cells are macrophage, mast cell, fibroblast. Structures are the blood vessels, lymph vessels, and sebaceous gland also present. So this is a structure of a skin. There is the epidermis is a superficial layer, whereas dermis is a tough and deeper layer. It has so many subcutaneous tissue. It has so many uh, blood vessels, lymph vessels, vein, artery, everything is there. So dermatological history: how long has the lesion has been present? If the patient has schema, then we have to ask the patient to how long the lesion has been present. How has it distribution changes over the time? Any distribution changes is there? Has it been associated with sun exposure or exposure to heat or cold? We have to ask the patient to the sun is exposure to the sun से हो गया है, मतलब उसके सन एक्सपोजर से हो गया है या हीट या कोल्ड से हो गया है, ये सब पूछना पड़ेगा अपन तब. Next we have to go, does patient having any past history of systemic disease, example diabetes mellitus? Does patient having any history of exposure to chemicals? पेशेंट कभी केमिकल से एक्सपोजर हो गया या कोल्ड से या हीट से या सन से एक्सपोजर हो गया, ये सब पूछना पड़ेगा अपन. डज पेशेंट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलिनोमा कंडीशन हैविंग? अभी अभी कभी पेशेंट आ गया तो मतलब हिस्ट्री पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है. सो इन द स्किन एग्जामिनेशन वी हैव टू स्टडी इज हैविंग melanoma in his history. So what medication pattern patient is taking? What are the medications the patient is taking about? वो सब देखना पड़ेगा अपन. So point to be assessed. क्या क्या पॉइंट अपन असेस कर सकते हैं एक पेशेंट आने के बाद अपन? Lesions must be described according to their color, shape and using the dermatological terms. So point to be assessed, dermatological पॉइंट ऑफ व्यू से अपन मतलब डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करके अपन डिस्क्राइब करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर कलर, शेप एंड द यूजिंग डर्मेटोल शेप एंड साइज. डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न मस्ट बी डिस्क्राइब्ड. मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, किस किस जगह पे है, और पैटर्न कैसा है, राउंड है, रेक्टेंगल है या इरेगुलर शेप है, सब पैटर्न डिस्कस करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है इन द
डर्माटोलॉजिकल टर्म्स में। लीजन मस्ट बी पैल्पेटेड फॉर द कंसिस्टेंसी। टेंडरनेस है क्या देखना पड़ता है, टेम्परेचर या डेप्थ कितना है वो भी देखना पड़ता है। इट इज टू बी सो पैच मस्ट बी फ्लैट लीजन 1 सेंटीमीटर और ग्रेटर इन द डायमीटर। एग्जाम्पल वीटी लोगो का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है, देख लो यहाँ पे वीटी लोगो कैसा होता है। फ्लैट लीजन्स 1 सेंटीमीटर और ग्रेटर इन पैचेस। पेप्यूले एलिवेटेड सुपरफिशियल सॉलिड लीजन अप टू द 1 सेंटीमीटर डायमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, लेकिन ये सॉलिड होगा। फ्लैट लीजन्स एलिवेटेड सुपरफिशियल सॉलिड लीजन्स अप टू द 1 सेंटीमीटर। राउंड एंड फ्लैट टॉप्ड, ये कैसे होंगे, राउंड होंगे। एग्जाम्पल एक्नी का दिया है पेप्यूले के लिए। इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जगह पे ऐसा ही नहीं होगा, मतलब इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। शार्पली डिफाइंड एज सुपरफिशियल और इनडिस्टिंक्ट बॉर्डर, डीप में भी रहेगा ये। प्लेग सोरियासिस आपने पढ़ा होगा, ये वही एग्जांपल है। प्लेग अ फ्लैट एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स 1 सेंटीमीटर और मोर ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलेजन्स ऑफ अ प्यूपिल्स। मे बी सेंट्रली डिप्रेस्ड, सेंट्रल में डिप्रेस होगा। यूजुअली वेल डिफाइंड, ये मतलब वेल डिफाइंड होगा। आप देख रहे हो सोरियासिस का केस है ये। फ्लैट एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स 1 सेंटीमीटर और मोर। सो नोड्यूल कैसे होंगे, ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर और सॉलिड मार्बल लाइक लीजन्स ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। ये भी सुपरफिशियल लेयर में पाऊंगा। सो कीलॉड देख रहे हो और एक्नी, ये एग्जांपल हो गया। लार्ज ऑफन डीपर एंड फेमर देन द पेपले, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये कभी कभी हार्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी सॉफ्ट भी हो सकते हैं। सो हाइव्स इरेगुलर और एडिमेटस लाइक एलिवेशंस कॉल्ड एज व्हील, राउंड एंड इरेगुलर। कभी कभी राउंड भी हो सकते हैं और इरेगुलर शेप में हो सकते हैं। डिस्क्रेट और मे बी कोलेज और यूर्टिकेरिया एग्जाम्पल के लिए हाइव्स। वेसिकल well defined superficial elevation containing serious fluid up to 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल वेरिसेल्ला, एग्जाम्पल वेरिसेल्ला जोस्टर का यह है। वेरिसेल्ला है। डिस्क्रेट इरेगुलर स्केटर्ड ग्रुप्ड और लीनियर। इरेगुलर स्केटर ग्रुप में होगा या लीनियर में होगा। It's a bulla, superficial elevation containing serious fluid more than 1 सेंटीमीटर। It's a superficial elevation containing serious fluid more than 1 centimeter, differ from vesicles only in size. Example: contact dermatitis. Pustules, small superficial elevation containing turbid purulent fluid, usually necrotic inflammatory cells, vary in size and shape. Exudates may be white, yellow or greenish yellow. एग्जाम्पल के लिए pustular psoriasis or pustular acne. You can see here the pustular psoriasis, it's a very serious case, and the pustular acne. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please share and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much.